Hi everyone, my name is Rakesh Sharma. Welcome to my YouTube channel. This is my second video on Angular tutorial. In this video, we will discuss about what is data binding. So in Angular, there are two types of data binding. First is one-way data binding and second is two-way data binding. Let's move on. What is one-way data binding? So first of all, we will discuss about what is data binding, right? So data binding is nothing, it is just a simple way data flow from one component to another component. That means data binding define the interaction, right? Interaction between the component and DOM object model, right? Data binding is a part of Angular version starting from AngularJS. Means Angular 1.js is a first version of Angular. So now this is a very important topic in Angular. Let's move on. One-way data binding is there are three types of data binding. First is interpolation, second properties binding, and third is event binding. So let's move on. What is interpolation? So interpolation is types of data binding is used to return a HTML output from TS code, right? TS code means TypeScript file code, from component to view means template file means HTML file. So we will see how to use a interpolation in our project. So let's see. First of all, we will create a one properties. Let's say my name. Okay, my name is returned inside a string. We will use TypeScript data types and write here properties name. This properties name we will bind inside HTML file. Okay, so create inside h1 tag and we will use double curly bracket. Sorry. Okay, and bind of this property my name. Okay, my name. Let's save and go on. Here you can see the output of interpolation. So this is a simple way how to use interpolations. Let's if we want to use any other functions, any other methods, so first of all we will use another properties like let's say status is also return a boolean value true, and here we will return true, and these properties we will use inside HTML file. Okay, now use h1 tag. Inside this double curly bracket we will use a ternary operator. That means if this status is true, so we will return a true value. When this status is false, we'll return a false value. So let's see, and we will use ternary operator syntax. If status is true, okay, so we'll return available. If status is false, we'll return no available. Okay, so now save and save. Now here you can see this is available because I have returned a true value
if you want to return a false value, then here you can see return no available. Okay, so this is a simple way. And third is if you want to use any images with the help of interpolation, so let's we will make a one properties images, and this properties will return string value, and inside string we will use a URL. So I have one URL for testing purpose. We will use this URL inside PS file. Okay, now let's save, and again this properties will bind inside HTML file. We will use images tag and src source of image and lt name of images, demo images. Okay, and we will use inside src properties name inside double curly bracket images. Okay, and save. Warning, I am getting some error. Warning in Angular compiler plugin for type check existentially failing checkout. Okay, now again let's save. कभी कभी ये एरर थ्रो करता है बिना मतलब का, तो मैं इसे फिर से करता हूँ पोर्ट नंबर 3000. ओके, src images image. Okay, I am missing one tab. So it is saying images src. Okay, now surf 3000. एरर जब भी है तो हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरर हमें बहुत चीज़ सिखाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एरर आया यहाँ पे शो कर रहा है. We will use a new port number localhost 3000. Okay, now here you can see images. So this is a simple way how to use images with the help of interpolation. If you want to use properties binding, so then you can use square bracket. Nothing difference between interpolation and properties binding. So whenever we will use interpolation, you can use double curly bracket, and if you want to use properties binding, you must remember we will use a square bracket. Now here you can see the same output of images binding. Okay, so this is a simple API images for testing purpose. Now so let's move on. One thing here,
if I want to change this name with the help of function, I create one function. This function will return something. Let's say if I want to return Angular tutorial, this methods will use inside the word curly bracket inside HTML. Now here you can see Angular tutorial. Okay, so you can easily use any methods and functions, and we will call any method inside constructor. So this is a simple way how to use string interpolation and properties binding. Now let's move on event binding. Okay, so let's we will create a one button, and we will use inside this button click event. Okay, we will use these properties. Now here you can see these properties will call inside button. Now first of all we will create will check this button is working or not working. We'll use alert working. Okay, I'll remove. Now check. Okay, by default it's working. Okay, now if this button I want to change this properties name, this dot my name is equal to this dot my name equal to let's say Roshan. Okay, when we वर्किंग ये कभी क्यों आ रहा है, तो मैं इसे हटा दिया था।
अभी मैं आपको क्लिक इवेंट का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ टॉगल यूज करके। ऑन क्लिक नाउ सॉरी यहाँ पे टॉगल आएगा। ओके, टॉगल अगर ट्रू है तो ये शो करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं शो करेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको तो छोड़ देता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ। इस बटन में मैं क्लिक बाइंडिंग यूज करता हूँ। उस बाइंडिंग में उस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज को मैं, ये प्रॉपर्टीज मेथड को मैं यूज करूँगा। दिस फंक्शन को, फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, कुछ भी बोलो, इसको मैं यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे चेंज लिख देता हूँ, चेंज। ओके, अरे ओके, लेट्स सी, गेटिंग एरर, डिपेंड और क्लिक को सेव करना होगा। Okay, now here if I'll use this, now what happened? ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि हम क्लिक इवेंट में हम क्या पास करते हैं। सबसे पहले हम कोई प्रॉपर्टीज बनाएंगे, कोई भी मेथड बनाएंगे, उस मेथड को हम कॉल कराएंगे। लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया था टॉगल का। अगर उस बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो बटन कॉल होगा और ये जो प्रॉपर्टीज है उसको कॉल करेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने ट्रू रखा है। अगर ये ट्रू है, दिस डॉट टॉगल इक्वल टू, इसका रिवर्स चलेगा, नॉट ट्रू। ओके, और यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टीज को यूज कर दिया है। यहाँ पे टॉगल एनजी इफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का एक पार्ट है, यहाँ पे मैंने यूज किया है। अगर ये ट्रू है तो शो करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं शो करेगा। सो ये हमारा सिंपल एग्जांपल। अभी एक कमेंट में कोई पूछा था कि बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करें। ओके, तो बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कैसे होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज करने के बाद एक फाइल डायरेक्टरी होता है जो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फाइल डायरेक्टरी बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप इन एंगुलर। ये फाइल डायरेक्टरी को आप यूज कर सकते हैं। ये अब इसको, ये तो यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हैं। कॉपी किया एंड ये इंस्टॉल हो रहा है। हम लोग पेस्ट करेंगे इसको angular.json में, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल CSS का डायरेक्टरी दिया हुआ है। अब ये मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो हमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि बूटस्ट्रैप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल है नहीं। तो लेट मी चेक एंड हियर we'll use properties of bootstrap btn and primary. Okay, let me check. Okay, once again we'll use port
5,000. Now 5,000 को ओपन करते हैं, लोकल होस्ट 5,000। ओके, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है। अगर आप बूटस्ट्रैप का कोई भी कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप को go inside a bootstrap official website, and now here go inside example. If you want to use any other, basically I want to use this. Okay, and we will paste of this. We will use a never and never. ओके, कॉपी एंड हम पेस्ट कर देंगे इसको HTML फाइल पे। नाउ लेट्स सी, आप देख सकते हैं वो सारा कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि जो TS का फाइल है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट डेकोरेटर में यहाँ पे टेम्पलेट URL, स्टाइल URL, सिलेक्टर, जो सिलेक्टर है ये हमारा मेन फाइल है। इसको मैं अगर 2 बार मैं इसको अगर यूज़ करता हूँ तो ये हमारा 2 बार शो होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट टैग है। इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे तो हमारा 2 बार शो होगा, क्योंकि ये रीयूज़ करता है। तो अगर मैं इसमें जाकर अगर मैं फिर से इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 बार शो होगा। 2 बार शो नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है? So let's say ये तो पेरेंट्स कंपोनेंट है, पेरेंट्स कंपोनेंट से let's we will see how to create component. ng generate, g for generate, c for component and home page. Component name आप दे सकते हैं and now click. Now here you can see I have create one component home. These components automatically import inside app module.ts. Here you can see. If you want to create with manually, so you can just create and write something this import and ng module. So now here you can see declaration. Inside this declaration, because a declaration is a declare of components. Okay, and here you can see home component, and now inside this components we will go inside app home. Okay, this component, this selector tag we will use for reusability. Now inside we will use some other, so write a simple way. Hello world. And now this I want to use inside app component of HTML. Okay,
So we will use app home. So this tag is a main root tag of HTML home page. And this port 7000. NG 7000. Now here you can see this component is visible. So अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है. अगर एरर आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको रिजॉल्व करना जरूरी होता है. तो और भी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि सिर्फ वही बताते हैं जो उनको समझ में आता है, उनको पता है कि यही करना है. ना ऐसा चीज़ करें कि जो हमें बिल्कुल जैसे कि कहीं भी फंसते हैं तो वहीं पे रिजॉल्व करें, ताकि जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो देख सके कि रिजॉल्व कैसे होता है एरर, चाहे वो माइनर एरर क्यों ना हो या मेजर एरर क्यों ना हो. तो इसको रिजॉल्व करने के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू वे डेटा बाइंडिंग. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट.